इस वीडियो में विल बी लुकिंग एट सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन। आप अब तक ये देख चुके हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस के बीच में क्लासीफाई करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू सी कि इफ़ वी हैव अ मॉडल जहाँ पर हमारे पास किसी तरह से मल्टीपल क्लासेस के स्कोर्स आ रहे हैं, how can we convert those scores into legal probabilities, and then how can we use that for training that overall model। ये जो टॉपिक हमारा स्पेसिफिकली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी रेलिवेंट होगा जब हम न्यूरल नेट्स को पढ़ रहे होंगे। इनफैक्ट दिस इज़ अ टॉपिक फ्रॉम न्यूरल नेटवर्क्स, लेकिन राइट नाउ इज़ एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू इंट्रोड्यूस इट एटलीस्ट इनिशियली, बिकॉज आपने अभी अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी है और आपके जहन में ये मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी क्लियर है। सो इट्स द राइट टाइम टू बेसिकली डिस्कस दिस सॉफ्ट मैक्स एज वेल, जो आप इस वक्त समझ सकते हैं, और साथ साथ जो आपने लॉग लॉस का लॉस फंक्शन पढ़ा हुआ है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस पढ़ा हुआ है, उसको भी हम यहाँ पर दोबारा रीयूज़ करेंगे और देखेंगे कि जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हों रादर देन जस्ट 2 क्लासेस, तो उस केस में हमारा लॉग लॉस किस तरह से यूज़ हो सकता है एज अ लॉस फंक्शन, एंड देन हाउ कैन वी यूटिलाइज द होल थिंग इनटू द ट्रेनिंग ऑफ आर classifier to classify amongst C classes or N classes. Let's start by looking at the question directly. So what is softmax? What are we going to talk about? और हमारा इस वक्त ये मौजू क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये softmax को और इसकी हमें ज़रूरत क्या है। So आप सबसे पहले अपने जहन में ये लाइए कि जो sigmoid आपने सीखा था, it produces a number between 0 and 1, and we were actually very proud of that। जब हमने initially इसको बनाया था, आपको याद होगा आपसे चंद lectures पहले, when we created the sigmoid, we were very happy। We said, okay, now we have a capability of converting raw scores into numbers between 0 and 1। So like probabilities में हम convert कर सकते हैं, especially जब हमने नेगेटिव क्लास और पॉजिटिव क्लास या एक क्लास और दूसरी क्लास की probability को आपस में relate कर दिया था कि one of these probabilities is equal to the one minus the other probability। तो उस केस में हमने बिल्कुल इंश्योर कर दिया था कि now we're going to get legal probabilities out of this whole thing। So the sum of the probabilities of an email being spam or not spam, for example, is equal to 1। ये चीज़ हम देख कर आए थे जब हम sigmoid को पढ़ रहे थे। The softmax extends this idea into a multi-class world। अभी तक ये आइडिया जो सिग्मॉइड का है, ये सिर्फ 2 क्लासेस के लिए। सॉफ्टमैक्स इसी को मल्टी क्लास में ले जाता है। सो सॉफ्टमैक्स असाइंस अ प्रोबेबिलिटी टू ईच क्लास इन अ मल्टी क्लास प्रॉब्लम, एंड द प्रोबेबिलिटीज अक्रॉस क्लासेस ऐड अप टू 1। सो आपके पास फॉर एग्जांपल स्कोर्स हैं, मल्टीपल क्लासेस हैं, और हर एक का स्कोर आ रहा है कि व्हाट्स द स्कोर ऑफ बिलोंगिंग टू दिस क्लास। नाउ दैट स्कोर कुड बी एनी नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इट कुड बी अ नंबर विच इज लाइक अ ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोबेबिलिटी, जैसे कि अलग अलग सिग्मॉइड्स का आंसर अभी हम देख कर आए हैं पिछली वीडियो के अंदर कि जहाँ मल्टी क्लास 1 वर्सेस ऑल या 1 वर्सेस 1 आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर सब आंसर्स जो हैं वो स्कोर्स हैं जो कि सेगमॉइड्स से ही निकल कर आ रहे हैं, बट दो स्कोर्स डोंट ऐड अप टू 1। they're not legal probabilities। So now we want to we have this mechanism, we have this new scoring function, this new activation function actually, the softmax, which converts in a multi-class world, which converts these raw scores into probabilities that add up to 1 across classes। And then another thing that you need to remember कि ये सिर्फ तब चलता है जब आपकी हर एग्जाम्पल सिर्फ एक क्लास से बिलोंग करती है, यानी इट वर्क्स फॉर मल्टीनोमियल, इट डज नॉट वर्क फॉर मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। ये उस केस में नहीं चलेगा। उस केस में अगर आपके पास वैसा है तो देन यू यूज मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो अभी हम देख कर आए। बाय द वे, एंड इस बात पर हमने वहाँ पर गौर नहीं किया था कि जब हम 1 वर्सेस ऑल कर रहे थे, सो लेट्स से 1 वर्सेस ऑल या 1 वर्सेस रेस्ट या 1 वर्सेस 1 भी जब हम कर रहे थे, तो हम वहां पर बड़ी आसानी से मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन भी कर सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल इन योर 1 वर्सेस ऑल यू हैड लाइक फॉर एग्जांपल डॉग और नॉट, cat or not, and let's say horse or not. Now all these three were probabilities, and you could have easily said that okay, if the probability is greater than a certain number, then you assign it multiple labels. So it's like, I don't know, 30% dog and 20% cat and y% horse. It does not make sense for this example, but it makes perfect sense for example, emotions. It's 30% happiness and 20% sorrow, and I don't know, the rest of it is surprise.
So that could be easily, we could have used those mechanisms, and the same goes for, by the way, one versus one as well. So we could have easily used those scores and defined thresholds and done multi-label classification using those techniques. ठीक है, पहली बात तो ये अपने जहन में रखें. और सॉफ्ट मैक्स उस केस में नहीं लग सकता जहाँ पे आप मल्टी लेबल कर रहे हैं. ये मल्टी लेबल के लिए नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है मल्टीनोमियल के लिए, जहाँ पे योर इंस्टेंस बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन ऑफ द क्लासेस जिसके ऊपर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. अच्छा जनाब, एक क्विक सा साइड नोट, क्योंकि आगे जाकर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. ये आपको सिग्मॉइड याद होगा जो हमने सीखा था. इस सिग्मॉइड को ही हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एक डिफरेंट फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आई जस्ट लाइक आई ब्रिंग इट टू द डिनोमिनेटर एंड आई परफॉर्म दिस एंड देन आई टेक e raised to power x in the numerator and I get this. So there are now two ways, and this is all sigma x, and these are the two ways of writing the sigma x, and obviously this is the whole thing is equal to 1 over 1 plus e raised to power minus x. तो ये सब के सब डिफरेंट तरीके हैं एक ही चीज़ को लिखने के, एंड इट रिजल्ट्स इन द सेम फंक्शन. तो देयर इज नो डिफरेंस. तो हमने आगे जाकर इसको यूज़ करना है. मैंने इसलिए एक दफ़ा क्विकली यहाँ पर रिवाइज करवा दिया है कि वहाँ आप कंफ्यूज ना होते रहें कि जी ये वाली चीज़ तो कहीं से भी इसकी तरह की नहीं लग रही. तो यू शुड नो कि द टू आर इंटरचेंजेबल. Now let's take this real example. So you have multiple classes, meaning classes are greater than 2. So we can generalize logistic regression to softmax regression. And how can we do that? So you have one of C classes. For example, you have 4 classes. So you have the classes are 0, 1, 2 and 3. So whatever. नीचे मैंने इसको apple, orange, banana, mango एक फल की तस्वीर है, उसको आपने इन classes से के अंदर उसको classify करना है. And x is your feature vector. So given x, what's the probability of apple, what's the probability of orange, what's the probability of banana, and what's the probability of mango. Now the thing is that this in its raw form does not sum up to 1. If we want these to be legal probabilities, we want this whole thing to sum up to 1. It does not in its raw form. So अभी जो आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन सीख कर आए हैं, वहाँ कोई भी चीज़ इनको मजबूर नहीं कर रही कि ये आपस में सम होकर 1 हो रहे हो. So the softmax is basically a way of converting these C raw scores to probabilities that sum to 1. That's in simplest of words, that's softmax. And let's see how it does it. This is your softmax equation. This is your softmax scoring function. So all you're doing here is कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका z है, मैं यहाँ पर इसको सिंपल इससे ला रहा हूँ, लेकिन मैं इसको किसी भी तरीके से स्कोर से ला सकता था. So z is my raw score. So you take your easy so for example I have let's say 4 classes, so that means the I goes from 0 to 3. So 0, 1, 2, 3, 4 classes. ठीक है, तो I मेरी total number of classes हैं. So for any particular class I, the softmax score of that class I would be e raised to the power z. मैं जो भी इसका पिछला स्कोर की वैल्यू आएगी उसको e की पावर में ले जाऊंगा, डिवाइडेड बाय मैं सब के सब जितने भी मेरे पास स्कोर्स हैं उन सबको e की पावर में ले जाकर आपस में सम कर दूंगा. So this is extremely simple. You just जो भी स्कोर आपके पास पहले से आ रहा है उस क्लास का, उस स्कोर को आप e की पावर में ले जाएं न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर, वो सारे के सारे स्कोर्स जितने आए हैं सबको e की पावर में ले जाकर आपस में सम करते हैं. That's your softmax. And if you do it for 2 classes, your softmax is identical to your sigmoid. That's the fun part. So you just do it for like this class 1, easy over, and this is like your class for example z. So ez over ez plus e raised to power 0. ये आपको मैं इसीलिए एक मैथ की क्विक सी चेंज पीछे करवा के लाया. So this is your one class and this is your other class. So ez over ez plus 1. So this is your sigmoid. And then if you just do it for the other class, e0 over ez plus e0, and this is 1 over ez plus 1, which is actually equal to this thing. So you just like 1 minus this thing, so you'll get this. So your softmax is identical to sigmoid for 2 classes. Alright, so let's take an actual example ताकि आपके ज़हन में बिल्कुल ये concept जो है वो
क्रिस्टलाइज हो जाए और कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रह जाए. सो लेट्स एज्यूम मेरे एक्स वेक्टर मैंने इनपुट किया और मेरे पास जो भी कोई क्लासीफायर चला, सो देयर इज़ अ क्लासीफायर हियर, और उस क्लासीफायर ने जो है वो मुझे जो आंसर दिए हैं वो ये दिए. सो दीज आर द स्कोर्स ऑफ बिलोंगिंग टू द फर्स्ट क्लास, टू द सेकंड क्लास, टू द थर्ड क्लास एंड टू द फोर्थ क्लास. ये चारों क्लासेस की मेरे पास probabilities हैं. Probabilities तो नहीं, obviously these are raw scores, 5, 2, -1 and 3. So these are scores. These could have been probabilities that don't sum up to 1, but here these are just scores, any numbers. So now what I'm going to do is I'm just going to do this 5 को यहाँ e की पावर में ले गए, this 2 को यहाँ e की पावर में ले गए, -1 को यहाँ ले गए, 3 को यहाँ ले गए, and then in the denominator I just sum up for all of these. So e5, e2, e-1, e3, and I get this, this, and this, and you can see the way it's constructed, these have to sum up to 1. So this is what we call the softmax. By the way, इस point पे अब हम ready हैं ये समझने के लिए भी कि हम इसको softmax क्यों कहते हैं. That is just to differentiate it from a hardmax. So आपको याद होगा अभी हम जो मल्टी क्लास की एग्जांपल्स करके आए हैं वहाँ पे हम ऐसे केस में इस क्लास से, फॉर एग्जांपल दिस इज योर फर्स्ट क्लास, हम इससे बिलोंगिंग बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज द हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ देम, तो वी वुड, बल्कि हम यहाँ तक आते ही ना, हम यहाँ पर स्कोर देखते और 5 इज द हाईएस्ट, तो हम कह देते कि जी ये वाली क्लास विन हो गई है, इसको असाइन कर दें. सो व्हाट यू वुड हैव गॉटन इज दिस, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ हार्ड मैक्स. यानी कि आपके पास जिसका स्कोर हाई है उस क्लास को आपने ओके कर दिया, ट्रू कर दिया, और बाकी क्लासेस को आपने फॉल्स कर दिया. ये अभी आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में 1 वर्सेस ऑल, 1 वर्सेस रेस्ट में और 1 वर्सेस 1 के अंदर सीख कर आए हैं. लेकिन यहाँ पर यू डूइंग अ सॉफ्ट मैक्स, लाइक यू आर रिटेनिंग द स्कोर्स. सो ऑल्दो इट्स स्टिल मैक्स बट यू आर रिटेनिंग द रिमेनिंग स्कोर्स. इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, क्या हमें ज़रूरत पड़ गई एक्चुअल स्कोर्स मेंटेन करने की? एंड द रीज़न इज़ एक्चुअली कि इन स्कोर्स की मदद से वी कैन ऑलवेज गिव अ फीडबैक टू आवर क्लासीफायर आफ्टर क्रिएटिंग इट्स लॉस, आफ्टर कंपेयरिंग दिस with the ground truth, and then when we can give a feedback to the classifier and say कि आप ground truth से भी कितने दूर हैं, आपका loss कितना है, cost कितनी है आपकी इस पर. और वो cost अगर हम hard max के बाद निकालें तो हमें कोई fine grained cost नहीं मिल रही होगी. So for example true answer जो है वो 0 1 0 0 था, meaning कि जो सही क्लास थी वो ये वाली थी और जो इसने प्रेडिक्ट की थी वो ये वाली थी. सो नाउ इन दोनों को आपस में कंपेयर करके कोई नतीजा निकालना इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होगा एज अपोज टू कि इन चीज़ों को आपस में कंपेयर करके नतीजा निकालना है, वेयर वी हैव दीज नाइस कॉन्फिडेंस वैल्यूज़ कि हमारा क्लासीफायर कितना कॉन्फिडेंट है कि इसकी वैल्यू ये है. सो इट लाइक द ट्रू आंसर इज स्टिल फार अवे बट इट्स नॉट एज फार अवे एज इट इज़ हियर. ठीक है, और जैसे जैसे ये इम्प्रूव होता जाएगा, ये वाला नंबर बेहतर होता जाएगा, अल्टीमेटली दिस नंबर वुड बी वेरी क्लोज टू 1 एंड वी गोना से ये, और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो चुका है. सो दैट्स द इंट्यूशन बिहाइंड व्हाई वी वांट टू यूज अ सॉफ्ट मैक्स इंस्टेड ऑफ अ हार्ड मैक्स in our multi-class classification. बाय द वे ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं न्यूरल नेट्स के अंदर, तो ये सॉफ्ट मैक्स और ज़्यादा आपको मज़ीद इसकी ज़रूरत पड़ेगी जिस पर हम न्यूरल नेट्स यूज़ करेंगे और उसके अंदर इसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे. All right, here are a few examples from Andrew Ong's slides. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास this is a case with 3 classes, and you can see that your softmax is basically creating these straight line boundaries, decision boundaries between your various classes. तो आपका लीनियर क्लासीफायर अभी भी लीनियर क्लासीफायर ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो हर क्लास के बीच में एक लीनियर लाइन लगा रहा है. एंड नाउ हियर वी हैव अगेन 3 classes, c is equal to 3, but in this case the boundaries look very different, and again you have c is equal to 3 and the boundaries look very different. Here we have c is equal to 4, and here we have c is equal to 1 2 3 4 5, so c is equal to 5, and here you have c is equal to 6. So these are all examples of using a neural net. Basically ये जो आंसर्स हैं ये एक न्यूरल नेट की आउटपुट है. सो न्यूरल नेट जस्ट आप लोगों को मैंने अभी फॉर्मली नहीं पढ़ाया है, बट अ न्यूरल नेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट्स. सो अलग अलग लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासीफायर्स को जोड़कर एक की आउटपुट को दूसरे की इनपुट दे देना, दैट्स व्हाट्स एसेंशियली कॉल्ड अ न्यूरल नेट. लेकिन ये मौजू अभी थोड़े दिन बाद आएगा जिस वक्त हम इसको पढ़ेंगे. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एट ऑल. सिर्फ डिसीजन बाउंड्रीज आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए कि किस किस्म की डिसीजन बाउंड्रीज एक लीनियर क्लासीफायर बना सकता है जबकि वो बाइनरी हो और उसको हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हो. सो दैट्स द ओनली पॉइंट हियर. अच्छा जनाब, नाउ हाउ वुड यू डिफाइन अ लॉस फंक्शन
for your multi-class classifier. So for example, we have 4 classes और जो true इसका label था उसका vector ये है. So the correct label is this one. लेकिन जो हमारी hypothesis आई जिसको मैं y hat से indicate कर रहा हूँ इस theta x की जगह, so ये y hat जो मेरी hypothesized output है उसके अंदर मेरे पास Softmax ने ये values दी हैं मुझे, right? So you can basically add them up and see if they add up to what you expect them to add up to, which is 1. But anyhow, ये आपकी outputs हैं जो आपके पास आएंगे. But now how can you compare these two and see कि इस पूरी चीज़ का loss कितना है? I would ask you to basically pause the video, use your prior knowledge to figure out कि can you calculate the loss for this one. The hint is कि वही loss use करने की कोशिश करें जो आपने इससे पहले सीखा हुआ है. So I hope कि आपने करने की कोशिश की है, and I hope you have tried to calculate the loss, and I hope you have reached this conclusion. So the loss between this y and y bar, y hat, is just the negative of the sum over all of the classes, the sum over all of these labels. You go over all of these labels and you do your yj multiplied by log of y hat j. Why would this work? Why does it make sense? And why don't we have the 1 minus y and 1 minus y hat term here, जो कि हमारे log loss में इससे पहले थी? Why don't we have those? Because हमने ये चीज़ पहले ensure की थी कि our problem descriptions जिनको हम यहाँ deal कर रहे हैं उसमें each instance belongs to one and only one class. So therefore the truth value it's guaranteed to be one hot. It's guaranteed to have just one positive one in amongst all of the classes. ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक से ज़्यादा ones हो. तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक one है तो that means okay, now this will boil down to this basically, and this is 0, this is 0, and this is 0. So you're essentially your loss is just the negative of y2 log y2 for this particular instance, which is minus log y2, and for in general it will be just minus log yj for the j where your yj is equal to, so y minus log y hat j where your yj is equal to 1. ये सिर्फ उस केस में 1 होगा, right? and इससे आगे का लॉजिक आप लोगों के लिए बहुत आसान है. इससे आगे का लॉजिक वही है, वही पूरी इंट्यूशन है जो उस पॉइंट पर थी जहाँ पे हमने पहली मर्तबा क्रॉस एंट्रोपी लॉस का फॉर्मूला क्रिएट किया था कि हमने ये कहा था कि when y is equal to 1, when the true label is equal to 1, the minus log of h theta x, या in this case जिसको हम y hat कह रहे हैं, the negative log of y hat would basically जब ये 1 के करीब होगा तो हमारी कॉस्ट 0 के करीब होगी, यानी हमारा लॉस 0 के करीब होगा, कम सज़ा देगा. और when this is close to 0, because we know अगर ये वाली चीज़ें probabilities हैं तो when this is close to 0 and this thing is 1, we know when this is close to 0 then this will penalize it, this will give it a very high cost. So ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा जिसको ये प्लस इन्फिनिटी कर देगा और वो प्लस इन्फिनिटी बेसिकली हमारी बहुत हाई कॉस्ट हमें डाल देगा, यानी इन्फिनिट कॉस्ट की तरफ इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटली हाई कॉस्ट एज वाई हैट अप्रोचेस टू 0. ठीक है, तो ये रीजनिंग वही वाली है, यहाँ पर कोई नई बात नहीं है. अगर उस वीडियो में आपको समझ आ गई थी तो यहाँ भी समझ आ जाएगी. सो नाउ यू हैव अ मैकेनिज्म ऑफ बेसिकली कैलकुलेटिंग अ लॉस फॉर अ मल्टी क्लास क्लासिफायर गिवन इट्स ट्रू लेबल्स. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई. सो the overall cost for the entire training data set would then just be calculated based on this loss. So it comes here and you just calculate it for the whole training data for all instances in your training and you're done. So once you have calculated this loss, what do you do then? You run your gradient descent. And then what does your gradient descent do? Your gradient descent basically goes back and changes the weights throughout the network from where these answers are coming from. So if it's a neural net, वो सबसे पहले आखिरी लेयर के अंदर चीज़ों को ठीक करेगा और फिर उससे पीछे जाएगा और उससे पीछे के लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट्स के वेट्स को बेहतर करेगा और फिर उससे पीछे जाएगा. तो हम देखेंगे जिस वक्त उस पॉइंट पर जाएंगे कि इसके अंदर 2 पासेस होते हैं, एक को हम फॉरवर्ड पास कहते हैं और दूसरे को बैक प्रोपिगेशन कहते हैं. एंड दैट वुड बी रियली फन, बट एट दैट पॉइंट ये वाले कॉस्ट और ये वाले सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा उस पॉइंट पर काम आएंगी.
ऑल राइट जनाब, तो हमारा मौजू यहाँ पर ख़त्म होता है फ़िलहाल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर जितनी डिस्कशन थी वो मुकम्मल हो चुकी है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, बिल्ड करना है, जिनके ऊपर न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि इसमें अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं भी है, थोड़ा उसमें वक्त लगाएं, इसको अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जब तक आपको इसकी असाइनमेंट नहीं मिलती, ताकि इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। सो विल स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह विल बी बैक with our new model, new classifier very soon in the next lecture.